शीश आजकल मेरे दिन कुछ ज़्यादा जल्दी निकल रहे हैं यार. I don't know what I'm doing nowadays. कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो. तेरे दिल में मेरे दिल में whatever it is. Hey Ketan, good evening and welcome to the stream. कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? मेरे दिन बहुत गंदे जा रहे हैं यार. बुखार हो गया. ओके कुछ नहीं, बिजी चल रहा हूँ यार थोड़ा. और लाइक मोटिवेट फील नहीं कर रहा. जैसे मोटिवेशन गायब हो गया पूरा मेरा पिछले कुछ दिनों से. अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. चल अब भी बंद नहीं हुआ. ये गलत बात है यार. नहीं सॉरी, ब्लूम तो चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए थी. हुआ तो ऐसे कुछ नहीं होगा, तो मुझे ऐसे नहीं कुछ होने भी नहीं वाला. बट यू नो फीलिंग अ बिट डाउन. आज मैं 3 बजे उठा था मॉर्निंग में. सोने का स्टेट ऑफ प्ले था वो देखने के लिए. उसके बाद नींद पूरी नहीं हुई मेरी. बच गया भाई. Sunlight calls itself salvation. We're sneaking about the slums of late. Like as if they were sowing the seeds of revolt. Just see if I'm wrong. Wickedness grows in shadows, sure enough. And these dark times cast long shadows indeed. 'Tis this way to Mason's Den. Looking for me, friend. Bearing good tidings, I hope. Else here to put me in chains, I'll wager. No, it's salvation brings you here, aye? I've had ghost to ask the good folk of Grand Sorin about salvation myself. Seems I'm cursed with a villain's mien, though. One look at my face, stalls a man's tongue dead. Had I your gentle manner, I'd have them singing long and loud, no doubt. Seems to me we share a common goal. Perhaps you'd take on my investigation. Ah, that's grand. Here, take this with you. Seems this way leads outside as well. Cyrus knows. Those without a trade. That token I gave is a countersign. It will mark you as friend to agents of salvation. May have loosened their tongues as well. हाँ मेरे इंस्टीट्यूट चल रही है करंटली एक्चुअली. I hope you'll return to share your findings, good Arisen. इंस्टीट्यूट चल रही है जिसमें आई एम लर्निंग गेम डेवलपमेंट, फोटोशॉप, 2D एंड 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन. That token I gave, I hope you'll... सो करंटली जो अभी मेरे लेसन चल रहे हैं, जो क्लासेस चल रही है वो फोटोशॉप पे है एंड अडोबी इलस्ट्रेटर पर है. दोनों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ओवरऑल.
सियाश सीख रहे हो, ओके। कितने टाइम का कोर्स तुम्हारा सियाश का? Take care, you aren't soaked in water. The gatherings to take place down in the catacombs, I hear. You'll not find me there. Just far too dangerous a place to brave for a night's diversion. The gatherings to... You'll not... शीश यार, हद हो गई। I should probably drink a coffee. I don't really want to right now. Okay. Okay, nice. सीखो यार, सीखो। तुम्हारी एज क्या है? You're just 19 right now. You will do it. बहुत टाइम तुम्हारे पास अभी। So, what do you say of my selection? I'm sure you'll find all you need. Give me my forgery. Not done yet, I fear. Pray, give me a while longer. I'm sure you'll find all you need. Anytime. There's a barber shop. Oh, I see we are kindred spirits, sir. Will you be at the gathering then? Word is there's to be a high... Don't wanna official make inside. one यार, honestly. I don't wanna do anything right now. Not that us lot will be permitted to speak with one in such an office directly, mind. चलो नट टाइम में निकलता है कैटाकॉम की तरफ। Have your pick. What will it be? Understood. कह रहा ना मोटिवेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है। क्या हो गया मुझे यार? अब लंच की तो बात ही अलग है, वो तो लाइक डिफरेंट चीज़ है, तो वो यू शुड प्रॉब्ली मेक योर लंच ऑनेस्टली। You see, have your pick. What will it be today? आज जल्दी सोऊंगा थोड़ा यार। ऑयल कहाँ है भाई? What will it be today? What will it be today? Have your pick. Come again soon. खरीदना पड़ेगा इन दोनों से किसी पास तो, आई एम श्योर। I've been at my wandering a year now, all around Gransys. Seems something's lost or loath to be found anew. Pay it no mind. Idle muttering, friend. Now, let us talk of business. Now, let us talk of business. You do. ऑयल दे दे भाई, काम आएगा। Now, pray.
equipment to improve. We'll like fine shops selling weapons and sundry. हाँ, इसलिए मुझे सर्दियाँ इतनी पसंद नहीं है. लाइक मुझे ओवरऑल लाइक एटमोसफेयर काफ़ी पसंद है. सीरियसली मुझे ओवरऑल एटमोसफेयर काफ़ी पसंद है. बट जब लाइक काम करने की बात आती है सर्दियों में, बहुत मरी खाती है भाई, बहुत ज़्यादा मरी खाती है. इसलिए आई डोंट रियली लाइक विंटर्स, स्पेशली दिस ईयर. इस साल तो लाइक पता नहीं क्या हो गया विंटर्स के अंदर यार. लास्ट ईयर तो मैं लाइक मॉर्निंग में 4-4-5 बजे उठ जाता था बिकॉज आई यूज्ड टू डू जिम बैक देन. बट इस साल तो पता नहीं क्या ही हो गया, भगवान जाने. ना उठा जाता है, ना कुछ काम करा जाता है, दिन भर ऐसी छत ही पड़े रहो. बैर बन जाता हूँ मैं, काम करता हूँ, गुफा में पड़ रहा हूँ पूरी सर्दियों में. पुणे में भी ठंड है. चलो जयपुर में ठंड तो कम हुई है कम से कम पहले से. पहले के मुकाबले बहुत कम ठंड है जयपुर में. Normalize hibernation in humans, huh? The catacombs lie beyond the river. Here we can rest, manage inventory and skills, and so on. नहीं नहीं. बक बक. एक्सीडेंटली मैंने एक एनपीसी को मार दिया. मारते गार्ड आ गया मेरे को जेल ले जाने के लिए, और मुझे ये मंजूर नहीं है. That was a hilarious moment, honestly. Whew. अभी बंद कर दो, बात ही खत्म. बट कैन यू इमेजिन ह्यूमंस का हाइब्रिनेशन कैसा होगा? क्या करोगे तुम हाइब्रिनेशन में पूरे? The catacombs lie beyond the river, north of the camp. Are your travel preparations complete? I'd imagine one would never tire. No. 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 Pray, call again. थ्री मंथ्स होना होगा विंटर्स के 75% अटेंडेंस कोटा An armor. इधर ही छूट जाएगा. Country, city. सो आई थिंक जो ह्यूमंस का हाइब्रिनेशन हुआ इट वुड बी समथिंग सिमिलर टू कोविड. हाँ, जहाँ हम दिन भर सर घर पड़े हैं, मज़े मार रहे पड़े पड़े. आई गेस लाइक सब मज़े नहीं मार रहे थे ऑब्वियसली, इवन नॉट मी, बट आई थिंक इट विल बी सिमिलर टू दैट.
आई मीन आई वुड लव दैट काइंड ऑफ टाइम, अगर किसी पॉजिटिव वे में आ रहा है तो। खैर वो बात अलग है, मैं तो अभी भी घर ही पड़ा रहता हूँ। There's a freight convoy not far from here. Come, we'll join them. यार इतने सारे डायनामिक इवेंट कब आ गए इस गेम के अंदर? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे साले, कहीं नहीं जा रही तू। Taken. Not even a single doubt about that. Especially अगर हम करंट गेम्स की बात करें तो। Taken is my childhood game यार, especially Taken 3. I used to play it with my cousins and brothers and friends in co-op. बहुत 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 अच्छी यादें जुड़ी हुई इस गेम से। या हाँ, तो भाई वो गेम कोई फाइटिंग में रिप्लेस नहीं कर सकता उसको डायरेक्टली। ये आ गए भड़वे साले, आओ बाहर। चलो ऐसा तो नहीं हुआ हमारे बीच में कम से कम। टॉकिंग अबाउट योर ओल्डर ब्रदर और इज यंगर देन यू और कजन्स। द वे टू द कैटाकोम्ब इज दिस वन। यहाँ पर तो अपन गए थे एयर पैसेज के अंदर, बट ये लॉक था। अरे यार इतने सारे डायनामिक इवेंट कब से आ गए इस गेम के अंदर? मैं लिटरली पहली बार फेस कर रहा हूँ इतने सारे। मतलब थे तो सही लेकिन इतने भी नहीं थे। आई थिंक हार्ड डिफिकल्टी में इन्होंने बढ़ा दी डायनामिक इवेंट्स आई गेस। गुड थिंग ओल्डर ब्रदर गॉट इट। हाँ मेरा भाई बड़ा ही है मुझसे।
एक सेकंड डर गया कौन है Hello. Yes, Arisen. फ्यूजन Yes, Arisen. It's well ancient, this bridge. Hope it still holds. There, Master! Skeletons! A bridge. Serve as a fine landmark. The skeleton is skilled indeed. Bones! Walking bones! Strength in numbers, Arisen. ये स्पेल कौन सा है यार अच्छा नाउ आई सी लुक एट दैट स्पेल केतन This way to the catacombs, Arisen. Skeleton! Insects! The road splits here. They rampage Sure, which way indiscriminately. is to our नाइस नाइस एंजॉय वलंजा Must be the work of the darkest magic. Let's scatter those bones. There, Master! Skeletons! Skeleton! They rampage indiscriminately. The monsters that lurk here keep this path all but deserted. बाय द वे अगर तुमने अभी ड्रैगन्स डॉगमा 2 का लेटेस्ट ट्रेलर नहीं देखा ना यू शुड प्रॉब्ली वॉच इट दैट गेम इज गोना बी अमेजिंग माय गॉड इट कैन बी गोटी इट कैन बी गोटी इट इज अ गोटी कंटेंडर इजीली There, Master! Skeletons! Skeleton is skilled indeed. साले Bones! Walking bones! We have triumphed. प्लेड हाफ आवर स्टार्टिंग थोड़ी स्लो है मेरे भाई कौन सी क्लास चूज़ करी वैसे तुमने Before setting off, we ought to equip ourselves to suit our objectives. There, Master! Skeletons! This way to the catacombs, Arisen. अरे साले Must stay calm. One at a time. अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ ज़्यादा इन पे डैमेज नहीं करता ओवरऑल डोंट नीड इट टाइम Move on their own. Mage actually support class है so don't expect that much action Sorcerer offensive magic based class है Mage support class है so अगर अब तो खेलो जब तुम गेम में कैपिटल पहुंच जाओ ग्रैंड सोरन के अंदर देन यू कैन चेंज द क्लास इधर आ बैक Not that way. इट इज़ नॉट दैट वे अच्छा ऊपर की तरफ ही है तो रास्ता यहाँ से भी मिल ही जाएगा Spots in the forest. Hobgoblin! Formidable foe. We'll rout them in a single charge. So many. Even in numbers, a weakling is a weakling still. I'm at your side. We have triumphed. करंटली मैं सॉर्सरर खेल रहा हूँ जिसके अंदर तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट Incline mystique. ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ये प्रीटी मच ऑफेंसिव बेस्ड क्लास है
जो तो तुम्हारी इमेज है वो सपोर्ट बेस्ड क्लास है. Hobgoblin! A formidable foe. Strength in numbers, Arisen. Did it! We'll rout them in a single shot. Even in numbers, a weakling is a weakling still. एल्डन रिंग को गेंशिन इम्पैक्ट से कंपेयर. अरे बाप रे. अरे बाप रे. कौन था तुम्हारा महान क्लासमेट? मुझसे मिलवाओ, स्ट्रीम पे बुलाओ उसको. What's that? This leads down into the catacombs. Yeah, no shit, girl. Within lie the catacombs. Stay vigilant, master. काल में दर्द होगा तो सुनते ही. भाई तुमने एल्डन रिंग कंप्लीट कर रखा है ना पूरा? कौन सी थी तुम्हारी मेन क्लास? आई मीन मेन बिल्ड कौन सा था? क्लास क्या? Was to walk without a lantern. The crypt was fashioned ages ago, before the French came. We'll need to open this gate to use the lift. Long ago, when the people worshipped the old gods, the gods of nature. Listen to that. Cannot pass through. Listen to that lower building. Room beyond the rubble. That's like so subtle. But still, it works. I suspect it's why they returned their dead to the soil, to the earth god. Like पॉन्स लिटरली ऐसे ही बोल रहे हैं. Cleansed and born anew in the coming generation. अगर तुम्हारा ध्यान नहीं हो तो तुम्हें वैसे पता नहीं चलने वाला कुछ भी. रख तेरे पास. Strength in numbers, Arisen. I'll take that. There, Master! The undead! हाँ आटी भाई आरपीजी है. I will protect you, Arisen. There, Master. You're welcome. With a closed coffin. He looks ready to spit something. Fire! If we lit lamps, we could more easily सोच रहे हो आप खेलने की? ought to light the way lies at the back of this room. I mean, I will highly recommend. Find the mechanism faster with more light. This lever likely opens a door. नहीं बहुत अच्छे गेम्स है आरटी भाई. मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा ट्राई कर लो. एंड ड्रैगन्स डॉगमा 2 का लेटेस्ट ट्रेलर देखो. The lamplight will make आप समझ जाओगे मैं क्यों हाइप्ड हूँ उस गेम के लिए इतना. जो अभी कल आज मॉर्निंग में ट्रेलर आया है वो देखो एक बार. fireworks well. What's this? स्टोरी कॉन्टेक्स्ट या फिर गेम प्ले कॉन्टेक्स्ट. Strength in numbers, Arisen. Dark, forgotten age saw this. Undead! ओके
सो बेसिकली गेम हैवली इंस्पायर्ड है यूरोपियन मिडिवल यूरोप से. सो एक काफ़ी अच्छा मिक्स है बिटवीन हाई फैंटेसी एंड ग्राउंडेड फैंटेसी. लाइक है तो फैंटेसी बट काफ़ी लो फैंटेसी है. फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है. गेम ऑफ थ्रोन फैंटेसी है लेकिन वो फैंटेसी जैसा फील नहीं होता. सो उसका जो ओवरऑल वाइब्स हैं एटमॉस्फेयर उसकी तरह है. जिसके अंदर आप एज अरिजन प्ले करते हो. एक ऐसा कैरेक्टर जिसका हार्ट ड्रैगन ने चुरा लिया है. अब उसके पीछे एक कंप्लीट रीज़न है क्यों चुराया ड्रैगन ने, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड आपको ड्रैगन को हराना है. ये बेसिक लोर है गेम का. सेटअप है बेसिकली, स्टोरी सेटअप. लोर अच्छा है बट जो प्रेजेंटेशन है गेम की वो इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज 2012 गेम है. एंड जब डेवलप करा था गेम बहुत ज़्यादा बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स थे कैपकॉम के सर पे. सो लाइक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है स्टोरी की बट लोर अच्छा है काफ़ी. गेम प्ले वाइज बताऊँ तो वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कॉम्बैट इन ए RPG. 2012 में रिलीज हुआ था गेम बट स्टिल इट प्लेज लाइक अमेजिंग. इट प्लेज अमेजिंग सीरियसली. सो इसी गेम में टोटल 9 क्लासेस हैं. बेसिक क्लासेस फाइटर, स्ट्राइडर एंड मीज. एडवांस क्लासेस सॉर्सरर, मैजिक आर्चर, मैजिक मिस्टिक शील्ड एंड समथिंग लाइक दैट. उसके अलावा है असासिन. ऑनलाइन खेल रहे हो? नहीं ऑफलाइन गेम है. ऑनलाइन में इसमें एक फीचर है इसके अंदर आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं ना, गेम एक फीचर है पॉन नाम का जिसमें आप 2 कैरेक्टर क्रिएट करते हो. एक तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे आप खेलते हो, एक आपका AI कंपेनियन कैरेक्टर जिसे आप कंप्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो. एंड जिस हिसाब से आप खेलते हो ना गेम को, आपके जो पॉन्स हैं वो आपको देखकर सीखते हैं. एंड अगर कोई अदर प्लेयर आपके पॉन्स को हायर करता है ना तो वो उनके गेम प्ले में ऐसे खेलेंगे. सो या तो वो ऑनलाइन वर्क करता है बट प्रॉपर ऑनलाइन नहीं है. वही डैश स्टैंडिंग वाला चक्कर है इसका. सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन खेलना, मतलब ओरिजिनल लेजिट कॉपी में खेलना ऑनलाइन सर्वर्स के साथ. बिकॉज जो पॉन सिस्टम है ना इट इज़ लाइक रियली गुड. एंड पॉन सिस्टम में ऐसा भी है अगर किसी अदर प्लेयर के पॉन ने आप जो क्वेस्ट कर रहे हो वो कर रखी है ऑलरेडी, तो वो पॉन आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करनी है क्वेस्ट, यहाँ पर हिडन ट्रेजर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है. सो ऐसे वर्क करता है पॉन सिस्टम. सो लाइक काफ़ी इंटेग्रल है गेम प्ले के लिए पर्सनली. हाँ स्टीम पे है ये. स्टीम पे बहुत सस्ता मिलता है ये सेल्स के अंदर. 200-300 रुपये में मिल जाता है. अरे बहुत स्मार्ट है. 2012 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है. या ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ गेम दैट वाज रिलीज इन 2012 एग्जैक्टली. मैं वही कह रहा हूँ भाई AI बहुत स्मार्ट है इसका. एंड ड्रैगन्सडॉग्मा 2 का तो अब तुम खुद ही सोच लो कितना स्मार्ट होने वाला है. अब फॉर एग्जांपल मेरी आदत क्या है, मैं हर एक बॉक्स को ब्रेक करता हूँ. तो जो मेरी पॉन है ना इजराइल नाम की, ये सब कुछ ब्रेक करती है एंड अपने आप चीज़ें खोल के कलेक्ट करने लगती है. बिकॉज मैं वही करता हूँ गेम के अंदर मोस्टली. सी ऐसे. और जो मैं भी क्लास खेल रहा हूँ ना थोड़ी स्लो क्लास है, सॉर्सरर क्लास है. अदरवाइज मैं तो आपको एक्शन दिखा था प्रॉपर्ली कैसे वर्क करता है गेम का. हाँ क्रिम्सन डेजर्ट, या वो गेम प्ले फोकस करता है लेकिन ड्रैगन्सडॉग्मा काफ़ी यूनिक है इसकी सेटिंग की वजह से. बहुत ज़्यादा यूनिक है ऑनेस्टली. लाइक बेसिकली अ जापानीज RPG, अ वेस्टर्न RPG मेड बाय जापानीज डेवलपर.
was the seat of a god, you're not protect you. सी अब वो पॉन देखो सेट कर रहा है वहाँ पर जाके उसको ब्लास्ट करने के लिए. वो तभी ऐसा कर सकता है जब उसका जो पॉन का जो मालिक था ना वो ऐसा कुछ करे. अगर ये गेट ओपन होता ना तो ये पास में रख के उसको ब्लास्ट करके आती ताकि एनिमीज अपने आप मर जाते. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. Something's amiss with that one. Throw them out on the floor. या कोई ग्राउंड ब्रेकिंग गेम तो नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक अगर एग्जैक्टली मेरे टॉप ऑफ द हेड तो ध्यान नहीं मुझे. ग्राउंड ब्रेकिंग इतना ध्यान नहीं मुझे. Be ready. Come. Can't be fought in their assault. I'll leave the weak foes to you. I shall take on the strong. ये स्पेल देखना आर्टी भाई. You're basically creating an earthquake. एंड इस गेम में एलिमेंटल बेस्ड है वो भी है गेम प्ले जैसे अपने ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड में है ना. सो बहुत ज़्यादा एलिमेंटल बेस्ड है इसमें भी लाइक एनी अदर आरपीजी. यही नहीं सिर्फ प्रॉपर एक्शन की बात करें विद माइंडलेस एक्शन यू नो वो वाली चीज़ नहीं है. We have triumphed. A walking dead. There. काइंड ऑफ वो स्टोरी वाइज ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना बट गेम प्ले तो बेटर है विचर 3 से. बहुत ज़्यादा बेटर है. Leave it to me. Seems a page torn from a diary, monster. या यू शुड ट्राई इट वंस एट To लीस्ट. the right of the door. उसके बाद देखना आप खेलना कंटिन्यू करना चाहो या नहीं. This lever may open the way to Salvation's meeting place. What's this? This looks interesting. There, Master! Skeleton Magi! And the really cool spell. Look at this. Human bones that move on their own! So cool. So freaking cool. You're creating a tornado. Literally. ऐसा कोई आरपीजी इसमें इस तरह की स्पेल है. इतनी ओवर पावर स्पेल्स हैं. What's this? इसमें एक मीटियोर का स्पेल भी है वो जो मैं यूज़ कर सकता हूँ. बेसिकली मीटियोर शावर करते हो आप आसमान में से एनिमीज पर. से अब पॉन्स कह रहा है कि मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पर है इस रास्ते पे और हेयर ओरिजिन दैट काइंड ऑफ थिंग. There must be a way around somewhere. We may be able to get down. This looks interesting. Any that would target the Arisen are mine. Must stay calm, one at a time. This skeleton is skilled indeed. Did it! Bones! Walking bones! This looks interesting. यार चीज़ पता है क्या है
आरटी भाई फेयर प्राइस तो इतनी किसी गेम की नहीं है. जो भी गेम आपको 4K का मिल रहा है ना, फेयर प्राइस तो नहीं है. लाइक मैक्सिमम मैं AAA गेम्स के लिए पता है कितने देना चाहूँगा, 3K. दैट इज़ लाइक मैक्सिमम. बट आजकल डेवलपर्स यूज़ नहीं करते रीजनल प्राइसिंग, और अपने हिसाब से प्राइस सेट कर देते थे, तो ओवर प्राइस तो है. अभी आपका जो याकुजा लाइक ड्रैगन रिलीज होता है वो भी वो प्राइस है, वो भी 4500 से कुछ का है. सो लाइक प्राइस से तो मैं अग्री नहीं करता, बट मैंने पर्सनली प्री ऑर्डर कर दिया गेम को, बिकॉज मैं लाइक 2018 से वेट कर रहा हूँ सीक्वल का. तो लाइक ये पहला गेम है जिसे मैंने पहली बार तो प्री ऑर्डर किया एंड फुल प्राइस में परचेज़ किया. अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को कि आप 4K में परचेज़ करो ये गेम. या श्योर. एंड इसकी बत्ती बुझने वाली भैया. लेट मी ऐड ऑयल. क्या हुआ, मैंने गलत में कर दिया क्या? शिट, मैंने ऑयल गलत में ऐड कर दिया आई थिंक. ये बात ही थी. Strength in numbers, Arisen. Uneven terrain. आजा आजा, थोड़ा पास आ. The sight of women excites it. It is exposed after it attacks. चालो भागो. Walking dead. There. Careful. They're fast for all that muscle. Strength in numbers. अगर तुम लाइक कंप्लीट प्ले थ्रू करना चाह रहे हो ना प्रॉपरली, चीज़ पता है गेम में एक्चुअली मल्टीपल एंडिंग्स हैं. मतलब एंडिंग्स एक ही है, बट ट्रू एंडिंग है ना वो आपको. हाँ, तो मैं कह रहा था अगर आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है ना गेम, स्पेशली जो करंट वर्जन है गेम का डार्क रीजन, ईजिली कैन टेक अप टू 50 आवर्स फॉर सिंगल प्ले थ्रू. 50 to 70 आवर्स. अगर आप नॉर्मल पेस में कर रहे हो, अगर रश करके खेल रहे हो, देन 30-40 आवर्स. 30 आवर्स. चीज़ पता है गेम का जो बेस्ट पार्ट है ना वो उसका DLC है डार्क रीजन, बिकॉज वो कम्प्लीटली उस पर फोकस करता है गेम प्ले पर. नथिंग एल्स, ओनली गेम प्ले विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. अब इनमें से मैं कोई फास्ट पेस क्लास यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ जो प्रॉपरली लाइक जिन्हें देखने में मज़ा आता है ना. आई एम नॉट यूजिंग एनी वन ऑफ देम. या तो ईजिली लाइक जो प्राइसेस में मिलता है ना गेम, लाइक आपको नॉर्मल सेल पे गेम 300 रुपये मिलता है. एंड लाइक इट्स वर्थ इट. मेरा ये थर्ड प्ले थ्रू जिसमें 150 आवर्स तो मैं कर चुका हूँ अभी. एंड ये इस प्ले थ्रू को ख़त्म करते करते आई एम श्योर 200 घंटे तो ही जाएंगे. कैसे बनाए थे ना. I'll take that. हाँ, तो गेम तो लंबा है, लेंथ वाइज तो लंबा है.
ये तो मैंने कर लिया था. चलो कंटिन्यू करते हैं मेन मिशन. It's someone speaking. Let's follow that voice to its source. RDR2 है. ओके. The And voice grows clearer. कितना कितने घंटे हो गए थे? Voices, Master. We draw near our quarry. अच्छा 1.5 साल लग गया था पूरा करने में. It is shut fast. Must be a way up elsewhere. We're nearly there. It is this way, Arisen. नहीं भाई सर्च करूँगा मत करो. Like can you imagine how much time it will take to 100% Yakuza 5? Step on any stray bones. Master, have you heard of the Knight's champion? Master, have you heard of the Knight's champion? Hey, thank you Rakshit. For it is fear which rarefies and distills the soul unto its rightly lofty. By the way, good evening and welcome to the stream. Good sir. चलो हो गया इसकी स्पीच. Come to join our flock. Hey Palpatine. This Yeah, exactly. is a dear arisen. यार उसको 100 करते करते पागल हो जाओगे तुम. That game like takes like 250 approximately hours to 100%. कैसा लगा ट्रेलर तुम्हें PS2 का? हाँ इसलिए मैं 100% कभी नहीं करता गेम्स. मैं हमेशा किसी गेम का लाइक जो मीनिंगफुल साइड कंटेंट होता है ना वो कंप्लीट करके मेन स्टोरी कंप्लीट करता हूँ बस. आई डोंट डू 100% बिकॉज इतना मैं गेम को पसंद भी नहीं करने वाला और इतना ना मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूँ इस गेम में, चाहे मुझे कितना ही अच्छा लगे. मे भी कुछ बहुत ज़्यादा रेयर गेम्स हो लाइक समथिंग लाइक DragonsDogma उन्हें लाइक मैं 100% करना चाहूँ because the gameplay is so fun. But even if you talk about Yakuza, I'm not gonna 100%.
यार गोली मारो यार, इतना टाइम कौन लगाएगा? अच्छा खत्म ही हो गया क्या? Quite a sight that was. Yeah, it was very Hideo Kojima, definitely. Stuff of every day to you, Arisen. It looks so cool, yaar. Graphically, it looks so beautiful, especially the biomes. We're going to different planets now. Seriously, that game will be really fun too. Like that, मुझे Dragon's Dogma 1 बहुत पसंद आया था. I almost spent like 100 hours in that game, The knight's chance. so I can imagine how amazing Death Stranding 2 will be for me. हार्ड क्यों लगा यार? इट्स नॉट रियली हार्ड. शायद बोरिंग कहना चाह रहे हो तुम, स्लो पेस कहना चाह रहे हो तुम, वो मैं समझ सकता हूँ, बट हार्ड तो कहीं नहीं था. These zealots slip past, but at least we snared this one. An humbler prize, to be sure, but at least he's talkative. No honor among thieves, eh? It was just a lark. All in good fun. I never gave over to that rot about destruction and salvation. Never. स्टार्टिंग स्लो है उसकी, मैं अग्री करता हूँ, बट यार वर्थ इट है वो गेम खेलना. We let him go free. The music is so good, graphically it looks so good and so beautiful. Gameplay mechanics are surprisingly good. They're even deep and like it's such a different game that उसके लिए वर्थ इट है खेलना मेरी ओपिनियन में. स्टोरी बहुत अच्छी है ऑफ कोर्स. It's all yours. Yeah, electric guitar working as a railgun and then battle axe. Arisen ran counter to the tides. A heretic, he said. But I see what reason. The sort like to hear reason. Come, sir. What's to be Test gained your from resolve. bloody in your hands? Know that we shall follow, whatever you decide. से अब ये ड्रैगन्स डॉगमा में आरपीजी चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी है तुम्हारे पास, बट वो लाइक तुम्हारे फेस पर नहीं, लाइक अदर आरपीजीज. फॉर एग्जांपल अब तुम्हें यहाँ पर एक चॉइस मिली है, अगर तुम इसे मारना चाहो तो मार सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो. इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर तुम इसको छोड़ देते हो ना तो तुम कुछ क्वेस्ट से लॉकआउट हो जाओगे, तुम वो क्वेस्ट कर नहीं पाओगे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. Don't be a fool, sir. Surely my gold is worth more to you than my head. It is your choice to make. हाँ, obviously gonna kill him. My. Didn't know if you'd have the stomach to do for an unarmed man. Suppose I was wrong to doubt it. Glad to know you're someone I can trust in times to come. And come they shall. I'll send word ere long, friend. We'll bring this skulk of foxes to bear, you and I. Sound judgment, Arisen. This was the only way. Yeah, exactly. Like that is, अगर तुम ये फ्रेज किसी रैंडम पर्सन को बोलना, इट विल बी सो लाइक क्या क्या बोल रहे हो तुम. बट इट इज कोजिमा, आई गेस. इट इज हिज स्टाइल एंड आई लव इट. आई लव इट फॉर व्हाट इट इज. Even had you spared him, doubtless Mason would not have shown such mercy. He's even developing another game, another stealth game. Most probably gonna be a spiritual successor to Metal Gear for Sony. So currently Kojima Production 3 गेम पे वर्क कर रही है. Death Stranding 2, Overdose and the new stealth game. जो अभी like production में नहीं है. It will take like 1 or 2 years, 1 year at least to start a proper production. But still, he's working on 3 games. Let us return to the capital. Now what's this doing? Yeah, working for both Sony and Microsoft. Exactly. I will protect you, Arisen. It bleeds.
टेल दो सालो अपनी तुम. देखो सालो कैसे भाग रहा है. ओए पक नहीं आ रहा मैं तेरे पीछे फालतू में. The road splits here. Let's be doubly sure of which will see us to our destination. Even the capital is not without its dangers. Best we remained cautious, Arisen. We'll find a vantage to fire down on our foes from atop the wall. Armed bandits, Arisen. Strength in numbers, Arisen. Straight from the road, we'll soon find monsters. बच गया. नीचे पड़ता डायरेक्टली अगर ये यार लगता तो. There, Master. Griffins. Where is the griffin? बड़ा नीचे आए एक बार. आएगा नहीं साला. अबे आ गया. लग गई आग. अब इसके पंखे चलाऊंगा साले के. पड़े नहीं नीचे. Was once a place under heavy watch. Lest we were no less vigilant now. Perhaps we'll find ore among the crags that litter this place. Yeah, it definitely did. It definitely did sutta bhai. By the way, how are you? Hopefully सब कुशल मंगल हो. Hopefully. Was once a place under heavy watch. Lest we were no less vigilant now. The mild weather year I'm fine. Gransys well suited for human life. Not feeling motivated, but I'm fine. This way leads on to the encampment. This
city has amenities to suit every need. Armorers, apothecaries, shall restore your health. Hold on. क्या चल रहा है आपका डार्क सोल्स 1 का प्ले थ्रू? I am my husband's wife. Not the last we'll call upon this evening. Hail, friend. Been some time. Trust you've been well? But come, if it was idle twittering you'd wanted, you'd have sought a prettier bird than Diesel Crow. Crows bring tidings, most oft grim. Me, I bring you work. Still grim, I'm afraid. Well? हाँ, खत्म होने वाला आपका गेम. Salvation again. Now there's word gave a man inside the castle. If that be true, he'll have need to leave the castle eventually to meet with the others. All I ask is that you keep watch. If you see someone leaving the castle, shadow them. I only have need of your eyes. Follow them and see what business has them out. I'll do the rest. या अगर DLC आप करना चाहो तो. Skulking about is more बट अगर बेस गेम की बात करें तो खत्म होने वाला है. but pray, lay your ship. पर्सनली सजेस्ट करूँगा पेंटिंग वो पेंटेड वर्ल्ड एंड DLC बोथ करना. वर्थ I इट. do it myself, but there's odd has DLC been is away pretty from good. Gransys for a time. Nothing for it, I fear. Might be better than the base game itself actually. Tell your findings to the innkeeper. Other than the last boss fight. Boss fight is not good. Tread carefully, friend, and quietly. What's more, सजेस्ट नहीं करूँगा शुट्टा भाई. डार्क सोल्स उसके बाद सजेस्ट नहीं करूँगा. बहुत लंबा गेम है वो. अब बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू डार्क सोल्स. फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. अगर आप उसको सिर्फ आप कुछ करना भी नहीं चाहो ना, साइड कंटेंट भी, अगर आप स्टोरी करना चाहो मेन गेम की DLC की, इट विल टेक अराउंड 40 hours to do that alone. playing the shadow is more simple than you might think. Keep watch over who comes and goes from the castle, and follow them what seems suspicious. Simple, aye? Those with aught to hide move about after nightfall. I would know. You'll learn the rest as you go, friend. Tell anything you learn to the innkeeper. You humans certainly do make a lot of expressions. अरे डार्क सोल्स 2 एक्चुअली मियाजाकी ने डायरेक्ट नहीं किया था. इट वाज डेवलप्ड बाय 2 अदर डायरेक्टर्स एंड उनकी नज़र में डार्क सोल्स डिफ़िकल्ट था बिकॉज दैट मियाजाकी वांटेड टू चैलेंज द प्लेयर्स. उन्होंने बेसिकली दे टुक रॉन्ग मैसेजेस फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ डार्क सोल्स 1 एंड आर्टिफिशियली मेड द सीक्वल अ लॉट हार्डर, लाइक अ लॉट हार्डर. So it is basically a very artificially difficult game because of the enemy placement. Enemy जो placement है, they are like multiple groups of enemies that you have to fight at the same time. That kind of thing. It is way too big for its own reasons. Boss fights, there are plenty of them, but most of them are not memorable. It's very like uneven game. अगर आपको पसंद आया then you're gonna love it. अगर आपको पसंद नहीं आया you're gonna get really frustrated about it. So I won't suggest you to play it right now. Just right after completing Dark Souls 1. I won't suggest that. मैकेनिक्स में उन्होंने एक फालतू का मैकेनिक ऐड किया है अडेप्टिविटी के नाम से. तो बेसिकली गेम में अगर आपको रोल करना है प्रॉपरली आई फ्रेम्स के साथ एंड लाइक मोस्ट कॉमन थिंग्स करनी है ना जो डार्क सोल्स 1 में ऑलरेडी हैं, उससे पहले अपग्रेड करना पड़ेगा. लाइक ऐसा मैकेनिक है जो हर एक प्लेयर अपग्रेड करेगा बिकॉज वो हर एक बिल्ड में मतलब काम आती है, हर एक बिल्ड में मस्ट है. सो लाइक दे एडेड दैट काइंड ऑफ मैकेनिक फॉर नो रियल रीज़न एंड और भी बहुत अनोइंग चीज़ें उस गेम के अंदर. So I'll suggest that you should probably wait before continuing your journey with Dark Souls series. Don't play Dark Souls 2 right after Dark Souls 1. I'll not beat round the bush. I'll have the good. I'm sure you'll anytime. The scrivener at the Black Cat here can duplicate objects gone lost and missing. What's more, the proprietor can furnish forgeries of certain items.
you has seen the dragon? Who saw it raise a village at the southern shore? No doubt. You were filled Give with Stephanie fear faith. and awe, Let's with return to trepidation. Salomed was a scholar, the leader of a council of sorcerers. He was a genius, a luminary. हाँ ओके तो आप चाहो तो कोई अदर सोल गेम्स भी खेल सकते हो सोल्स लाइक्स Put the fruit of the council's research to the flame and disappeared. आपको देखना है ना कि डार्क सोल्स कितना अच्छा है देन आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू प्ले व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गेम लॉर्ड्स ऑफ द फॉलन अभी नया वाला नहीं द ओरिजिनल रिलीज जो 2014 में आया था प्ले दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड ऑफ अ गेम डार्क सोल्स इज Aye, geniuses are so off-touched with madness. But enough of him. I care only about the tome he kept with him in his research. I would make it mine, sir. Even if it means sifting through the muck to find it. Yes, this is it. At long last, Salomed's grimoire is mine. Wears a humble look. But there's an aura of such power about it. My thanks, sir. Truly. I must do aught to repay this kindness in the future, should we meet again. And First we must find because out mankind ere Council. fears that which it does not understand. We dread the unknown, and ill know how to It was a respond. tome of considerable power. We abandon You all must be well satisfied to have it. nature. उसके अलावा तो यार मैं कौन सा गेम सजेस्ट करूँ आप कौन सी जॉनर खेलने में इंटरेस्टेड हो करंटली Take up arms against the fearsome dragon! Who among you has seen the dragon? ड्रैगन एज ओरिजिन्स खेलना अगर आपने वो नहीं खेला तो Then the gatherings of salvation. हाँ तो एक बार थोड़ा गैप दे लो उसके बाद आप डार्क सोल्स 2 खेल लेना डायरेक्टली यूर गोना लव डार्क सोल्स 3 दो अगर आपको डार्क सोल्स 1 पसंद आया ना यूर गोना लव डार्क सोल्स 3 'Tis a grave shame the Elysians slipped our snare. We shall redouble our vigilance here to keep the city safe. I fear you are as like a target as Sorcerer, though. Pray, be wary, Arisen. For now, I leave you with my thanks. Oh, level 57 We're to wait here once night is fallen. It will be my honor to show you the ready charges for the worm hunt. The choice is yours. Certainly. Then here are the details. By the Duke's decree, we spare no effort in gathering knowledge concerning the worm. As one arm, बट अगर आप अब आपने डार्क सोल्स 1 खेल लिया ना आपको लोर का आइडिया हो गया यू गोना एंजॉय डार्क सोल्स 3 अ लॉट मोर one such ruin has of late become home to monsters. We've received a request for escort. They've asked for you by name, sir. What response might I give them? My thanks, sir. His Grace has commanded the utmost attention be given to such matters. Pray, speak to Father Geoffrey at the cathedral in the city for details of the task. Were the decision mine, I would set every man we have to defending our strongholds. But such is our duty. Well met, good Arisen. 'Tis a heartening boon to have your assistance in our endeavors. या श्योर छोटा भाई I will not keep you long, for the survey party has already set out from Sorcerer.
They walk south to the ruins of the falls near the encampment. I know not what dangers await there, but I will rest easily knowing you accompany them. Pray fly now to their side and keep watch over them. Make her speed your steps, sir. The survey party set out for the falls by the encampment. Pray go with... I should probably change the class now. Strider assassin खेलता है. Let's play assassin. Who among you has seen the dragon? Oh, sheesh. No surprise. I should have your pick. Any you like. What will it be today? What will it be today? Have your pick. Any you like. Mystic Knight or Assassin, Magic Archer. रेंजर खेलता है. लास्ट टाइम मैंने रेंजर का भी ट्राई नहीं किया. Let's play Ranger. Yeah, definitely gonna use daggers. Which ones though? Yeah, Ketan, welcome back. Welcome back to the stream. कर लिया तुमने लंच? Nice, nice. What should I make over here? Fuck it. Let's go with this.
Appreciating beauty. I think we have a bowman's ring. एक तो डैगरिस बैंड हो गया ऑफ कोर्स. बोमैंस रिंग एक तो ये है, एक और होनी चाहिए. रेंजर्स बैंड ये रहा. चलो. Have your pick. Any you like? What will it be today? What will it be today? What will it be today? Silencer bow, poison arrow will be really useful. Sleeper will be useful. What will it be today? Have your pick. Any? What will it be? हंड्रेड किससे कटिंग विंडो हो गया. एडवांस ट्रिगर. इसमें एक रिकॉइल वाला था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं. लेट मी चेक इट. ये रहा, डैम्पिंग के नाम से. What will it be today? Have your pick. Come again.
adjust our inventory. टाइम क्या हो रहा है 7:50 I shall see you to the water god's altar. Follow me. This road should evening game over time and welcome to the stream. यार मैंने quest miss कर दी एक. By the way, I have never seen you before here. First time on the channel, I guess. No, this is my third playthrough of the game. Just doing a proper playthrough before the release of DragonsDogma 2. Tis fastest to cut through the quarry, master. वैसे भी कोरी जाना ही था क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए. हाँ. Either way, thank you for coming to the stream. Appreciate it, honestly. So, are you a fan of DragonsDogma? Have you played it before? Careful! A goblin! Stay watchful. I'm playing as Ranger and I forgot to took my a bow. Seriously. Darkness has us at a disadvantage. By the way, this is the first time I'm playing as a Ranger. So, how did you find it? Liked it? Loved it? Or you're on a middle ground like most people? Yeah, this is exactly why I'm doing this playthrough. I just wanted to relive this game one last time before I start playing DragonsDogma. And to make a video on it as well. I don't think I have an arrow. I think we need a long bow for a Ranger. Let's check in the inventory. This game doesn't tell you. Yeah, I can agree with you. What will it be today? I have a basic longbow. No, not gonna work. Should probably purchase a new one. See, this might be my fourth playthrough overall, and still to this day I'm finding new things in this game. So take that as whatever you want. And I'm expecting same things in the sequel, but much more fleshed out and with a proper guide this time. By the way, what is your favorite vocation game over? Also, I have installed an ENB, so the load times are quite a bit long because of it. But the game looks pretty good because of it.
so it doesn't bother me much. Yeah. Yeah, there are a lot of hidden mechanics in this game, or mechanics that the game doesn't really explain properly. So I won't really. Wait, how do you use? Yeah, okay, got it. This is the first time I'm playing this game with a controller. Usually play it with the keyboard and mouse. Assassin and Magic Archer. Both are the most overpowered classes in the game. Nice. And it can get really frustrating if you are mid-maxing the game without even knowing about it. Yeah, that level up system is not good in this game, honestly. Something I hope Capcom will fix in the sequel, because the level up system is same as the original, but I think more balanced with the stats. I'll take that. There, Master! The undead! I can see them. Yeah, I'm actually playing the game on hard difficulty for the first time, and I'm already like level 150 plus. So like the game is not really difficult for me. Yeah, I like this game a lot as well. It's just so unique. Okay, the damage output is pretty good in longbows. And since I'm playing on hard, I can easily level up the rank quite easily. Honestly, I'm glad we are getting a better version of this game in DragonsDogma. Yeah, DragonsDogma 2 basically will be the complete version of DragonsDogma 1, which Itsuno-san and team were trying to make in 2012. But yeah, I'm glad. Like, if you don't know about it, DragonsDogma had like a lot of cut content, and Capcom were only able to make 40% of the entire concept they conceptualized for this game. So the 60% of that content we have never seen. So I hopefully, if not the entirety of it, we will get most of it in the sequel, and looks like we are getting that, since we have 2 different playable classes. Elves are back in the game. Orcs are, I don't know if they're there in the game or not, but they most likely are, since they were in DragonsDogma Online as well, and a lot of other things. It's most likely because of the pawn system, the one save slot thing. Like, so people won't hire their own pawn, that kind of thing. This passage links south at the mouth of the quarry. Stay watchful. I'll not tarry about that. With this road open, the merchants of the capital will have an easier time bringing in goods from afar. 'Tis a fine thing for sellers and buyers alike, having trade on the rise. Good.
Also, the new class they revealed today was like it's so good. You can literally change your class between combat if you have seen the new Dragon's Dogma 2 trailer. Yeah, so people won't abuse the system. Not let down your guard. The path splits. What's that? Love this background music. Ah, understandable. They're actually not doing. Capcom is surprisingly keeping all of the, spoiler kind of things secret. I have watched the entirety of IGN coverage for Dragon's Dogma 2 and they haven't really spoiled anything. Everything they covered were already were told about the game or some things that we already know about it. The only thing they have shown that is new are the trickster style, which is not really about spoiling it because it will be really hard to understand that vocation. And the other is I forgot its name. It's a new class. It's the 10th class of Dragon's Dogma 2 in which you can switch your weapons mid combat. It's basically your hybrid class, but you can choose which one you want to, which vocations you want to use. You can choose up to 3 weapons in that class. And it is looking like a very fun class to play, honestly. Rife with spots where useful materials may hide. This passage links south and central Gransys. What a splendid woodland, and so rich in resources. Would be a grand place for such. Let me fight the dragon. He will be here. Not for the monsters. Though I'm not, it is not a right time to fight him because we're in the night, but still I'm gonna fight him. The water draws some beasts near. Stay sharp. I mean, despite how much time it took, Dragon's Dogma did sold like 10 million copies. If we count every single version, so like it is a successful IP, but it just took a lot of time because of its release time frame. It was released near Skyrim, so obviously it was not an instant success. I think something Capcom was expecting it to be. And Dragon's Dogma 2, Dragon's Dogma Online was also a success in Japan, but they never released it outside Japan. Something I will never understand because that game could have easily became one of the biggest MMORPGs because of its combat. But either way, one thing I'm one good thing came out of Dragon's Dogma 2's reveals is that the game is not really cult classic anymore. A lot of people are talking about it, surprisingly, a surprising amount of people. So I think it will sell really well. And I'm really happy about it because I want this to be one of the flagship IP of Capcom. These games deserves it, yeah. They're such a unique and such a good games. Yeah, I will play Dragon's Dogma 2 day 1. I have already pre-ordered it, Sutta bhai. I know that you should not pre-order a game, but I was waiting for the sequel ever since 2018. So yeah, I'm gonna play it day 1. The only game I have ever pre-ordered and the only game I have ever purchased on full price. It was 4.5k. Quite expensive, honestly, because of the regional pricing. The dragon should be somewhere here, right? I'm not seeing him.
अच्छा, I think last time मैंने उसको मार दिया था. I've already defeated this dragon once, and not much time has passed to respawn him, so I should probably continue the main quest. Yeah, the servers for DragonsDogma Online were shut down in late 2019, December 2019, from what I remember. But thanks to fans and DragonsDogma Online is alive again. You can play it with your friends in multiplayer or single player in private servers. It is pretty much playable. Season 1 at least. Yeah, using like that game will be huge. But I'm a bit afraid because my PC is quite old now. Will I be able to play it properly? I'm willing to play it on lowest difficulty, but I need at least a good frame rate. A consistent frame rate at least. Maximilian informed us of your coming. By your leave, I would ask you spearhead our force here. Our tactics are as such. We aim to strike from the front gate, but lack the time and means to batter down the door. Yeah, but I don't think my channel is big enough to get any kind of sponsorship. I ask that you pass through the hole you see there. Lay open the gate from within. I cannot say what may await you within. The danger is great, but I trust you will prevail. What gate are we talking about? I don't remember exactly. Yeah, okay, yeah. Now I remember. Just a moment. Either way, let me just finish this one quest, then probably gonna end the stream. There's a way down here. Ogre bone. The device must be nearby. It is wiser to take the stairs. Get a view of the place from above. That ballista had we a way to it. Anytime. The lever to operate this must be essential to us home. What's that?
Capcom has been on a roll since they developed that engine. Yeah, sure. Ever since 2017, they have been releasing some really amazing games, despite having some small fumbles like Resident Evil 3 remake and Marvel vs. Capcom Infinite. They have been doing pretty good for themselves. Yes. Goblin! Let's search the cottage. We must find a way to open the gate. What do you got? A small person might well slip through the cracks to find what's inside. There must be some way in. Let's have a look. Should have started this mission in daytime, honestly. Can't see anything. What is game over? What is funny? Finally. You can see something at least. It was on the other side. Yeah, I don't think DragonsDogma need to steal any spotlight from Starfield. That game is not getting any kind of spotlight right now. Is that shotgun sound? Not that huge of a damage.
शनिवार को मैं रहूँगा नहीं यार, शनिवार को मैं रहूँगा नहीं, मैं और सेठ तो बाहर रहेंगे शनिवार को। Yeah, they did honestly. हैं? Mostly because of their engine क्या मांग रहा तू मेरे से? क्या मांग रहा तू मेरे से? and their game design. तू मेरे से क्या चाहता ही होगा? बारह दिन पेटेंट करूँ तेरे को। ये 27 को शनिवार को दे देगा तू? 2700। 10 तारीख को देगा। Take care. From here on, the caves swarm with goblins. Hobgoblin! 'Tis a formidable foe. It's hard to see in this Dark Arisen. I am at your side. You'll rout them in a single charge. Anyone close to you. Even in numbers, a weakling is a weakling still. Waiting for us. Yeah, sure. Shoot. Yes. There are a lot of side quests like that. Even some main quests that are actually optional. For example, some of these quests I'm doing right now, they are pretty optional. You don't need to do any, like all of them if you want to continue the main story. I think notice board quests are infinite. Are they not? Because I've done like a lot of them in one of my playthroughs and they never end. There is an achievement for that. I have read about it, but I don't know. They might be infinite, they might not. Some of them are NPC quests, some of them are main quests that are optional, and some of them might be notice board quests, but I can't say anything about them. I'm not sure about them. Yeah, there are a lot. If they are not infinite, then there are a lot of them, especially the escort ones.
I think I tried completing every single one of them in my second playthrough, but never did. This got a lot frustrating because there are like there must be like 50 plus escort quests in this game, and doing them despite having the fast travel points is very frustrating. Nine. Oh, that was close. That was really close. Do I have any healing? I don't have any healing. I don't know about that, Sutta bhai. That game is like very heavy on both your CPU and GPU. I don't think it will be able to run on Steam Deck. That hurt a lot. No, not really. You get level up quite easily in hard mode because you get twice the XP and twice everything actually. Twice the money, twice the experience point, twice the discipline point. So you don't really have to grind if you want to level up your character. And BBI is already like very forgiving regarding the XP. So you can grind that if you want to. Let me climb that. Nice view. If you're talking about gameplay, then DragonsDogma, hands down, easily. If you're talking about story and characters, I'm sorry, but I love the Witcher universe a bit too much. But if you're talking about gameplay, then yeah, DragonsDogma on Witcher 3 every single day. Yeah, thank you for coming to stream. Appreciate it. And have a great day, Game Over. Oh, it is horrible. It is horrible. It doesn't even follow the rules of the actual universe it's based upon.
The dragon comes! Humans want destruction too! Humans want the dragon! Well, kill each other! Kill all you like! The end is mine! That's the end of the quest. The beasts are fled and the horde retaken! Victory is ours! Victory! Victory is ours! Victory! Victory is ours! All glory to the Duke! Magnificent, sir. The hold is ours once more. I've sent word of your feats onto the capital. The Duke will be most pleased, as are we all. Pray, accept this token of our thanks and esteem, Arisen. Still, their number was too great. No such horde existed in days past. I fear it an ill omen of things to come. Pray, let it not be too late to stem this tide. That's the end of it. Let's do the side quest now, which we can access through here, I guess. अरे यार बेटा चड्डी बनाने सुबह Take care. From here on, the caves swarm with goblins. It's hard to see in this darkness. I fear we'll find something waiting for us. Well, either way, I'm just gonna end the stream here for today. It's 8:29 p.m. Yeah, and 2 घंटे की stream हो चुकी है वैसे भी, so I'm just gonna end it. Thank you for coming to the stream, everyone. Thank you, Sutta bhai. Appreciate it, and it's good to finally see you after so many, days later. Have a great day, and thank you.